it is a regular singular point, then we can apply Frobenius method. Now Frobenius method says that you have to take yx is equal to x to the power r m0 to infinity am x to the power m as a power series solution where a naught is not equals to 0. So up to that I told, and this ODE has been considered y double dash plus bx by x y dash plus cx by x square y is equal to 0, and here x is equal to 0 is a regular singular point, so we can apply Frobenius method on that ODE, right? Am I audible to all of you clearly? Yes, sir. Yes. Okay. So by Frobenius method, you have to take y is equal to x to the power r summation m0 to infinity am x to the power m be a power series solution where a naught is not equals to 0. And that means in explicit form I can write x to the power r into a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube up to infinite, that is a naught x to the power r plus a1 x to the power r plus 1 plus a2 x to the power r plus 2 and so on. So you have to find the value of r and the coefficients, then we are done. Fine. So no need to write. Let us consider y is equal to x to the power r uh, m0 to infinity am x to the power m. That means this be a power series solution by Frobenius method. Frobenius method. Okay. Now I want to show you derivatives in summation form. Always you take the summation form here whenever you are applying that Frobenius method, and otherwise it will be difficult. Okay, to find the relation between the coefficients. So better to use the summation form always. Now in summation form, actually it is a solution, so it will satisfy the OD. Therefore, we need y double dash and y dash, right? So y double dash क्या होगा and y dash क्या होगा? So y it is our, ऐसे लिख रहा हूँ, am 0 to infinity am x to the power m plus r ना. If I multiply x to the power r inside, then it is m0 to infinity am x to the power m plus r. And what is y dash? Tell me. What is y dash? So you can differentiate the general term, and then you have to think about the limits. This, sorry,
this, right? Y dash. Yes. Yes, sir. Now लिमिट क्या होगा, m कहाँ से शुरू होगा, Sir, 1. 1. Yes, sir. think you are differentiating this series a naught x to the power r plus a1 x to the power r plus 1 this. Now if you differentiate it, first term रहेगा कि जीरो हो जाएगा, a naught x to the power r का डिफरेंशिएशन होगा a naught r x to the power r minus 1. सेकेंड टर्म का हो जाएगा a1 r plus 1 x to the power r. तो सभी टर्म रह रहे हैं यहाँ पे. Yes, sir. Yes, sir. तो a naught था, फर्स्ट टर्म a naught था and that is constant. After differentiation it becomes 0, but here first term is not constant, right? So after differentiating it is not vanishing. Therefore summation जो है, मतलब summation का जो लिमिट है, it will start from 0. मतलब जहां से था वहां से ही शुरू होगा. Are you getting? Yes, sir. Any doubt? Next, y double dash. So differentiate the general term m plus r x to the power m plus r minus 1 का differentiation होगा m plus r minus 1 x to the power m plus r minus 2, right? This. And limit semi. So in Frobenius ये differentiation थोड़ा ध्यान में रखना है. Limit will be same for every derivatives, because here r is unknown and we don't know what is the value of r. Okay, now you substitute these derivatives into the equation. So I am showing तो बेसिकली जो इक्वेशन था प्रीवियस इक्वेशन वो यही है ना. इसके लिए ही तो x equal to 0 regular singular point. मतलब previously the form I have shown, that is y double dash plus bx by x y dash plus cx by x square y is equal to 0. That form I have shown. And ये दोनों फॉर्म एक ही है ना. After multiplying x square you will get this x square y double dash plus x into bx y dash plus c x into y 0. Okay, so we will substitute y dash and y double dash on that equation. X square y double dash plus x into bx y dash plus cx into y 0. तो ये हो गया y dash y double dash and here bx and cx, these are analytic, no? These are analytic at the point x is equal to 0 as initially taken by us or given. Bx cx analytic at x equal to 0. Now since bx and cx analytic at x is equal to 0, then their power series representation exists. वही एनालिटिक मतलब वो पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करता है, राइट? Yes, sir. So since bx and cx are analytic at x is equal to 0,
Therefore power series representation exists for means about the point x is equal to 0, and we are assuming it is the power series bx का b naught plus b1x plus b2x square dot dot dot, and cx का power series c naught plus c1x plus c2x square and so on. Fine. About x is equal to 0 ऐसे ही टर्म्स आएगा bx and cx का. Now after substituting, actually first ये जो दिखा रहा है वो explicit form में सीरीज को substitute किया है, ठीक है. In explicit form they have substituted y dash and y double dash. तो first term क्या है, x square into y double dash. तो x स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश करेंगे तो ये क्या रहेगा, x टू द पावर m प्लस r हो जाएगा, राइट. मतलब एक्सप्लिसिट फॉर्म में दिस इज द सीरीज फॉर y डबल डैश एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर. So after multiplying x square it will be x to the power r into this, is not it? Are you getting or having some doubt? No, sir, not we're getting it. देखो यहाँ पे समेशन फॉर्म में है एंड वो समेशन फॉर्म को एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख रहे हैं. फाइन. y dash will be x to the power r minus 1 and you put r is equal, actually you put r is equal m is equal to 0 first term, m is equal to 1 second term, 2 third term, fourth term, ऐसे मिलता जाएगा. So in each and every term you will get x to the power r minus 1 common and therefore it will be x to the power r minus 1 into rest r a naught plus r plus 1 a1x plus so on. And similarly y double dash का भी वो जनरल टर्म में जनरल मतलब समेशन में m0 1 2 3 पुट करो, you will get the explicit form and from each term you will get x to the power r minus 2 common, so you take it and the rest remains the simplest form of the series. Now x square अगर y in the question it is multiplied by x square, so if you multiply it by x square then it will be x to the power r. So x to the power r into that, देखो वही लिखा है after substituting it into the equation, x to the power r into this plus next term क्या है x into bx into y dash. Now x into y dash करेंगे तो क्या होगा, सर x टू द पावर r हो जाएगा. x to the power r into that series, तो वही लिखा है x to the power r into that series and ये bx जो है bx का भी सीरीज डाल दिया है. ओके bx का भी सीरीज है यहाँ पे. सो bx का सीरीज x to the power r into y मतलब जो y dash का सीरीज एंड लास्ट टर्म क्या है cx into y, तो cx का सीरीज एंड y का सीरीज, तो cx का सीरीज है दिस and y हो जाएगा x to the power r into this. Fine. Now here what is the lowest degree term? Look, if you simplify that series then it start from x to the power r. तो लोएस्ट डिग्री टर्म जो है दैट इज x टू द पावर r, सबसे लोएस्ट जो है उसके उससे बड़ा है इनफाइनाइट तक है, बट सबसे लोएस्ट जो है दैट इज x टू द पावर r, राइट. तो हियर देखो इन द फर्स्ट टर्म व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, दिस. In the second, what is the coefficient of x to the power r? दोनों सीरीज का प्रोडक्ट है, तो इसमें ये दोनों सीरीज में जो कांस्टेंट टर्म आएगा प्रोडक्ट करके वही होगा x टू द पावर r का कोएफिशिएंट, मतलब दिस इनटू दिस, राइट. बाकी में तो x है ना, तो वो x टू द पावर r से ज्यादा हो जाएगा, राइट.
तो x to the power r का कोएफिशिएंट फ्रॉम द सेकेंड टर्म विल बी r into b naught into a naught. Do you agree? एंड थर्ड टर्म में x टू दी पावर r का कोएफिशिएंट वो भी कांस्टेंट ये a नॉट एंड c नॉट मल्टीप्लाई करके जो होगा दैट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r. एनी डाउट? नो सर. नहीं मैं ये एक्चुअली जनरल फॉर्म में दिखा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा मतलब टिपिकल लग रहा है. I have used the series for b means bx and cx, but whenever you do some numeric problem there b and c those are simple functions. Okay, in that case इतना complication नहीं होगा. तो ये फैक्ट याद रखना ये क्या कर रहा हूँ मैं. So I am putting the series for y dash and y double dash. Then I am finding or I am comparing the coefficient of lowest degree term. That is the main thing here. I am comparing the lowest degree term. So in that equation lowest degree term is x to the power r related term and coefficient क्या मिल रहा है. फर्स्ट टर्म से r into r minus 1 a naught, सेकेंड से a naught into b naught into r and थर्ड से a naught into c naught. राइट. तो अब इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड में तो x टू द पावर r का कोएफिशिएंट 0 है एंड लेफ्ट हैंड साइड में ये है ना x टू द पावर r का कोएफिशिएंट. सो द स्मॉलेस्ट पावर इज x टू द पावर r एंड करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस. ओके. So always whenever you are doing Frobenius method, you have to find out the lowest degree term and you have to compare its coefficients. Fine. So after comparing lowest degree term, coefficient of lowest degree term, देखो ये इक्वेशन जो नया मतलब जो रिलेशन मिला लास्टली वो क्या है. It is a relation. It is an equation in R. यहाँ पे हर एक टर्म में a नॉट कॉमन है एंड a नॉट क्या है नॉट इक्वल्स टू 0. यहाँ पे ये यूज हो रहा है एक्चुअली. a नॉट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये वैनिश हो जाएगा. दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. राइट. सिंस a नॉट नॉट इक्वल्स टू 0 therefore r into r minus 1 plus b naught r plus c naught equals to 0 and it is what? It is a quadratic equation in the variable r, isn't it? That is an important equation in Frobenius method. It is called indicial equation. It is called indicial equation. So how to get indicial equation? If I ask how to get indicial equation, by comparing the coefficients of lowest degree term. Okay. Okay sir. Now it is a quadratic equation, so it has two values. मतलब r जो है that indeterminate has two values, right? And on the basis of those two values we will get two different solution. तो एक वैल्यू मिल जा रहा है अभी r का वैल्यू. Initially we have taken the power series solution x to the power r into summation am x to the power m. तो जहां पे मैंने बोला था r अननोन है एंड ये am जो है वो निकालना है r एंड am. तो ये इंडिशियल इक्वेशन से r का वैल्यू मिल जा रहा है. I am getting two different values of r. Next task you have to find the relation between the coefficients. Okay. तो अभी मेन जो पार्ट है दैट इज डिपेंडिंग ऑन दैट रूट्स ऑफ दैट इंडिशियल इक्वेशन. ठीक है. मतलब टोटल 2 रूट है. अब दोनों रूट के हिसाब से सॉल्यूशन कैसा होगा वो रूट्स के नेचर्स के ऊपर डिपेंड करता है.
Now that initial equation has two roots. Now I am assuming three cases. I am considering three cases. Those distinct roots not differing by an integer 1 2 3, मतलब दोनों रूट का डिफरेंस जो है वो 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर नहीं होगा. ये पहला केस है. दूसरा केस ये है कि डबल रूट मतलब रूट्स आर इक्वल. एंड तीसरा केस क्या है? रूट्स आर डिफरिंग बाय एन इंटीजर. ओके, तो एक है नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर, double root and differing by an integer. Suppose after solving that initial equation, I am getting R1 is equal to 5 by 2 and R2 is equal to 1. Then which case? दो रूट है ये इक्वेशन का 5 by 2 and 1. Then which case? First. First case. First case. First means you find its difference 5 by 2 minus 1 or 1 minus 5 by 2. It is what? 3 by 2, and which is not an integer. So it is the first case that distinct roots they are not differing by an integer. मतलब difference करके integer नहीं आ रहा है, so they are not differing by an integer. First case. Now अगर मान लो कि after solving r का वैल्यू जो है वो 2,2 आ गया, दोनों ही सेम रूट आ गया. इन दैट केस डबल रूट, सेकेंड केस. एंड अगर r मान लो -3 एंड और एक 0, दो रूट है ऐसे, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? 3. डिफर बाय इंटीजर 3. मीन्स 0 माइनस ऑफ -3 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा. सो डिफर बाय इंटीजर. तो ये अनदर केस. ऐसे टोटल 3 डिफरेंट केसेस में सॉल्यूशंस क्या है दैट वी विल डिस्कस. If they are differing by an integer, what are the solutions? If they are not differing by integer, what are the solutions? And if they are equal, what are the solutions? तो ये 3 केस है. Now see, first case, if the roots are not differing by an integer, if the roots means I am assuming that the roots of the initial equations are r1 and r2, and if the roots are not differing by an integer, then दो सोल्यूशन कैसा होगा? पहला सोल्यूशन आएगा x to the power r1, मतलब जो फॉर्म था x to the power r समेशन am x to the power m, वही फॉर्म में मिलेगा सोल्यूशन. ओके, एंड सेकेंड सोल्यूशन वो भी सेम फॉर्म में ही मिलेगा. सेकेंड जो सोल्यूशन है वो भी x to the power r into m0 to infinity am x to the power m. Coefficient will be different, okay, but form will be same. That is the main thing. If roots are not differing by an integer, then form of the solution will be same and coefficients will be different. Okay, are you getting? Yes. Now double root case. In double root case, let's say both of the values of roots are r, मतलब दोनों वैल्यू ही r है. Then one solution will be x to the power r into this, मतलब वो x to the power r into summation am x to the power m form में. Okay, one solution will be in this form and another solution
another solution, it is not exactly in that form. Actually, to find to find the another independent solution, you have to apply a different technique. मीन्स वो क्या था, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर और कुछ मेथड तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे ना, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर when one solution is known. Yes, sir. तो वही मेथड से एक्चुअली यहाँ पे सेकेंड सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. फर्स्ट सोल्यूशन जो इनिशियल फॉर्मेट है फ्रूबिनियस मेथड का पावर सीरीज में, वही फॉर्मेट में आएगा. एंड सेकेंड सोल्यूशन जो आएगा बाय दैट रिडक्शन ऑफ ऑर्डर करके, वो हो जाएगा एक्चुअली उसका फॉर्म जो है उसमें ln आएगा. मतलब देखो दैट इज a term related to ln x. So y1 into ln x means that y1 into ln x plus x to the power r into a1x plus a2x square and so on. That will be the form of the another solution. Okay. And when the roots differ by an integer, in that case also ये दोनों मतलब सेकेंड फर्स्ट सोल्यूशन का तो वैल्यू आ जाएगा, मतलब फर्स्ट सोल्यूशन वही सेम फॉर्मेट में आएगा x टू द पावर r इंटू ए एम एक्स टू द पावर m फॉर्मेट में. बट सेकेंड सोल्यूशन जो है दैट इज रिलेटेड टू ln, उसमें ln रहेगा एंड एक k रहेगा, k इंटू y1 x इंटू ln x प्लस x टू द पावर r2, r2 मतलब सेकेंड रूट इंटू दिस. तो यहाँ पे एक दो कंडीशन लेना है कि r1 minus r2 greater than 0. That means r1 should be the larger root. Okay, मतलब फर्स्ट सोल्यूशन जो है ये पहला सोल्यूशन बड़ा रूट के लिए करना है. So keep in mind whenever roots are differing by an integer, then first solution that is for the larger root. मान लो कि r का वैल्यू जो है वो -3 and 1. Fine. So they are differing by an integer. Now what is the larger root here? 1. 1. So for r is equal to 1, you have to find y1. Okay. And another solution that is for r is equal to -3, उसका फॉर्म ऐसे आएगा k into y1 x ln x plus x to the power r2, r2 मतलब -3 into a naught plus a1x plus a2x square up to infinite. Here that k, ये जो k बोल रहे हैं, k वो जीरो हो सकता है एंड नॉन जीरो भी हो सकता है. That is depending on the problem. Okay, so three different case. इसमें सबसे सिंपलेस्ट जो केस है ये तीन केस में पहला वाला, ठीक है. फर्स्ट केस इज द सिंपलेस्ट केस बिकॉज दोनों सोल्यूशन का फॉर्मेट सेम है व्हेन रूट्स आर नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर. सेकंड सोल्यूशन, सेकंड केस में व्हेन रूट्स आर इक्वल, उसमें वही रिडक्शन ऑफ ऑर्डर करना पड़ेगा to find the second solution, and the form of the second solution will be y1x into ln x plus this, and differ by an integer होगा तो वो केस में और भी डिफिकल्ट है थोड़ा सा, so compared to first and second. इसमें भी सेकंड सोल्यूशन का फॉर्म वही y1 into ln x plus x to the power r2 into this, बट एक k मल्टीप्लाइड है. यू सी मतलब ये दोनों केस में सेकंड सोल्यूशन का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दिख रहा है कुछ? यहाँ पे ए टर्म ऑलवेज रहेगा बोल रहे हैं, मतलब ये वैनिश हो जाएगा ऐसा नहीं है. यहाँ पे ये टर्म वैनिश हो सकता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के, राइट. एंड हियर दैट फर्स्ट टर्म इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एंड हियर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए नॉट. सो ये दो जगह पे डिफरेंस है. Fine. So these are the formula. Now let us solve problems.
Look, Euler-Cauchy equation, all of you know, right? Euler-Cauchy equation Yes. studied in first semester. X square y double dash plus x into px y dash plus qx y 0. मतलब not actually px qx will be 1. What is the form? I am writing x square y double dash plus some constant a into x y dash plus b y is equal to 0. ऐसे ही था ना Euler Cauchy? Yes, sir. Now that Euler Cauchy equation, for that Euler Cauchy equation, x is equal to 0. It is a regular singular point, is not it? Because it is of the form y double dash plus a by x into y dash plus b by x square into y is equal to 0. Now it is px, it is qx. So x is equal to 0 के लिए x into px, x square into qx एनालिटिक होना चाहिए to be regular singular. तो वो हो रहा है ना? X is equal to 0. Is it a regular singular point for that ODE? Already discussed. ax bx ऐसे नहीं था, वो प्रॉब्लम था b a की जगह पे bx था, b की जगह पे cx था. यहाँ पे a भी कांस्टेंट है. तो x यहाँ पे px क्या है? a by x. X is equal to 0 singular. No doubt. Now x into px क्या होगा? A, x square into qx क्या होगा? B. a and b both are constant. So are they analytic at x equal to 0? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो x equal to 0 पे ये दोनों analytic है. That means x is equal to 0 is a regular singular point. So we can apply Frobenius method. Right. Now by Frobenius method, you take the solution y is equal to x to the power r summation a m x to the power m 0 to infinity where a not equals to 0. And I am telling you a shortcut or a shortcut in to find the indicial equation. Okay, indicial equation निकालने का एक shortcut दिखा देता हूँ. Actually ये previous वाला देखोगे तो पता चल जाएगा क्या shortcut है. So it is the indicial equation r into r minus 1 plus b naught into r plus c naught is equal to 0. Now what is b naught and c naught? That you have to find, right? Always that form will be same. B naught, C naught may vary. Now what is B naught and what is C naught? So B naught, that is actually the first term, means that constant term in the power series representation of Bx. And C naught, it is the first term in the power series representation of Cx. So if you compare here what is मतलब यहाँ पे ये बोलो कि bx and cx क्या है? For that equation, what is bx? b naught and cx c naught, right? Is not it? यहाँ पे bx into x था, वो bx नहीं है, यहाँ पे bx के जगह पे b naught दिया है सिर्फ एक कांस्टेंट. एंड cx into y था, तो cx के जगह पे c naught दिया है. Do you get it or not? How we are getting? Actually, it is the equation. Sorry. ये था फॉर्म. ये फॉर्म के साथ कंपेयर करने से वो फॉर्म bx एंड cx क्या आएगा?
ये दोनों फॉर्म कंपेयर करो, फिर बी एक्स सी एक्स क्या होगा बोलो। ये हुआ कि नहीं? Yes. And actually bx and cx these are constant, and for constant power series representation will be same, मतलब वही constant ही है और कुछ नहीं है उसका power series term. Okay, मतलब यहाँ पे अगर if we are going to find power series representation of bx and cx, only you will get this term, other terms will be 0 into x, 0 into x square, 0 into x cube, ऐसे cx के लिए भी ये c naught plus 0 into x plus 0 into x square ऐसे. तो what are the constant terms in that expansion? bx का bx के corresponding constant term b naught, cx के corresponding constant term c naught. Therefore, the initial equation will be r into r minus 1 plus b naught into r plus c naught is equal to 0. Right? Yes. और दूसरा प्रॉब्लम के लिए भी दिखाऊंगा, ये थोड़ा ट्रिवियल टाइप का लग रहा है तुम लोगों को, और बी एक्स सी एक्स को नॉन जीरो मतलब फंक्शन लेके दिखाऊंगा, नॉन कांस्टेंट फंक्शन की, उसमें बी नॉट और सी नॉट क्या है. फाइन. तो यहाँ पे इनिशियल इक्वेशन जो है दिस. नाउ टेल मी, ये जो इनिशियल इक्वेशन है एंड तुम लोग जो ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व किए थे मतलब in first semester are not the same. You think now in that way, auxiliary equation. What is the auxiliary equation for that Euler-Cauchy? Do you remember in solving Euler-Cauchy, what is the auxiliary equation? Actually x square m what? square plus हाँ? a m square plus a minus 1 m plus b. हाँ, तो वो आ रहा है कि नहीं? यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस ए बी नॉट माइनस 1 इंटू आर प्लस सी नॉट इज इक्वल टू 0. Is not it the auxiliary equation? Yes, sir. मतलब ये दोनों सेम है. So what we are getting that in case of Euler-Cauchy equation, that auxiliary equation is nothing but initial equation. मतलब ऐसे always होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, but in case of Euler-Cauchy, initial equation and auxiliary equation both are same. Now if you solve it, actually if you solve it you will get one root, that is means अगर R1 and R2 ले लेते हैं तो form of one solution will be x to the power R1. okay, मतलब यहाँ पे देखोगे कि जो कोएफिशिएंट है A1 A2 A3 A4 वो सब 0 हो जाएगा, एंड सेकेंड सोल्यूशन जो आएगा वो हो जाएगा x to the power R2 by that Frobenius method. Okay, and if these two are equal, in that case वो मतलब x2 सेकेंड सोल्यूशन हो जाएगा x to the power R2 into ln x. जो केसेस है ना वो Euler-Cauchy का सोल्यूशन, वो सब केसेस मिलता जाएगा. एक्चुअली ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो केसेस तुम लोग पढ़े थे Euler-Cauchy में, वही केसेस फ्रोबेनियस मेथड में भी मिलेगा. ओके, if R1 R2 different roots, we will get these two independent solution. if double root, then ऐसे फॉर्म में सोल्यूशन मिलेगा. ओके, तो वो देखूंगा हम लोग, मतलब ये तो जस्ट एक छोटा सा व्यू दे दिया है, बट ये सॉल्व करके नहीं दिखाया टोटल. आई विल शो यू दोस केसेस. okay, 7 minutes left. Fine. So let us solve one problem from example first. So it is our problem
x into x minus 1 y double dash plus 3x minus 1 y dash plus y is equal to 0. Now you tell me x is equal to 0. Is it a regular singular point? What is px? This, right? What is qx? Now it is clearly seen x is equal to 0, singular point, because px and qx undefined. Is it a regular singular point? x is equal to 0, regular singular point है कि नहीं? तो px को x से मल्टीप्लाई करो, देन चेक करो 0 पे एनालिटिक है कि नहीं. qx को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, देन चेक करो कि वो x इज इक्वल टू 0 पे एनालिटिक है कि नहीं. क्या लगता है? x into px which is analytic at x equal to 0. Yes, sir. And x square into qx. This, Yes, sir. which is also analytic at x equal to 0. So therefore, x is equal to 0 is a regular singular point. So we can apply Frobenius method for that problem. Fine. Look, no need to show, you just explain in one line that since x is equal to 0 is a regular singular point, we can take y is equal to some x to the power r summation m0 to infinity am x to the power m be a power series solution. Okay, just in one line you write that. No need to verify these things. Is it clear? Since x is equal to 0 is a regular singular point, we take y is equal to this as a power series solution. Means we can apply Frobenius method. Since x is equal to 0 is a regular singular point, we can apply Frobenius method. Now y dash and y double dash ये सब निकालना पड़ेगा. Okay, तो as I told y double dash क्या है, यहाँ पे जैमबोर्ड पे लिखा था this. Now इसके साथ x into x minus 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो एक्चुअली x स्क्वायर माइनस x दो टर्म हो जाएगा ना. x स्क्वायर इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस x इंटू वाई डबल डैश ये आ जाएगा, एंड 3x वाई डैश माइनस वाई डैश ये दो टर्म हो जाएगा, प्लस y is equal to 0. So overall how many series are there? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो ऐसे ये सीरीज लिखा है. ओके, बिफोर दैट अगर मैं तुमको इंडिशियल इक्वेशन पूछना चाहूँ, अगर सॉल्व करना है तो ऐसे ही करना है, बट अगर मैं पूछूंगा कि ओनली इफ आई आस्क व्हाट इज द इंडिशियल इक्वेशन, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन, वो शॉर्टकट टेक्निक से कैसे निकालोगे? What is in that case you have to find, मतलब you have to compare with that form x square y double dash plus that bx into x y dash plus cx into y 0. You compare with that and find bx and cx. I am telling shortcut to find indicial equation. And अगर नहीं कर, मतलब ये डायरेक्ट मेथड से भी इंडिशियल इक्वेशन मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ. अगर कहीं पे अगर ओनली इंडिशियल इक्वेशन के बारे में पूछा गया है तो कैसे करोगे? तो यू कंपेयर विद दैट फॉर्म एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस बी एक्स इंटू एक्स वाई डैश प्लस सी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और यू कैन कंपेयर विद दैट फॉर्म वाई डबल डैश प्लस बी एक्स बाई
x y dash plus cx by of whatever. What happened? Oh, okay. Okay, to cx by x square is equal to 0. So you can compare any of these two form. तो बेटर होगा क्या, मैं बोल दे रहा हूँ, बेटर होगा इसको ये वाला फॉर्म में लिखो, सेकेंड फॉर्म में. तो सेकेंड फॉर्म में लिखने से ये फॉर्म क्या हो जाएगा, y डबल डैश प्लस 3x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 y डैश. तो p मतलब bx क्या होगा बोल सकते हो यहाँ से, anyone? What is bx? X minus 1 by x, x minus 1. 3x minus 1 divided by x minus 1, right? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा कैसे हो. एंड cx क्या हो जाएगा, x minus 1. हाँ Sir, x minus, sorry, x by x minus 1. करेक्ट, x by x minus 1. तो ये दोनों जो bx एंड cx बोला, ये दोनों का पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 करो एंड वहां पे कांस्टेंट टर्म देखो क्या है. एक्चुअली फर्स्ट टर्म जो है वही कांस्टेंट है, तो वो देखो क्या है, b नॉट c नॉट मिल जाएगा, देन यू विल गेट द इनिशियल इक्वेशन. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू इन डिटेल्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you, sir. 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 Thank you, doctor.